class 7, page number 11. And in page number 11 up to question number 10 we had done. Now we have to do section 4, question number 1. Sir, IB card. Section 4. The question is, answer the following question in 2 to 3 sentences. Answer the following questions in 2 to 3 sentences. Good morning, ma'am. Okay, Good morning, sir. very good morning. Start reading. Good morning, sir. Very good morning. Distinguish between. Sir, good morning. Very good morning, Radhika. Distinguish between autotrophs and मैं भी लिखूंगी। पहले काम कर। मम्मी ने कहा था जब तक काम मेरी नहीं बात आपस में गप नहीं करते, पहले पढ़ाई में ध्यान देते हैं। छोटे भाई बहन जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें दूर करो पहले, इसलिए आप लोगों का पढ़ाई खराब होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हमें 2 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ लिखेंगे ऑटोट्रॉप्स, दूसरी तरफ लिखेंगे हेटेरोट्रॉप्स। इसमें क्या लिखेंगे? दी ऑर्गेनिजम्स which prepare their own food, like plants, green algae, are called autotrophs. Second, this is also first point. The organisms which depend upon others, to prepare or to get nutrition is called heterotrophs.
सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें? Autotrophs do photosynthesis. In this, heterotrophs are parasitic, saprophytic, और होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो मुंह से खाते हैं, चबा के अपने मुंह से खा जाते हैं। ठीक है। The next is write the word equation for photosynthesis. Okay, very good question. Write the word equation for photosynthesis. Yes, Diksha. Do you want to say something? Shall I tell the equation of photosynthesis? Yes, please. Go ahead. So carbon dioxide plus water, energy, glucose plus oxygen. Okay. So we'll write at first carbon dioxide plus water Water. plus minerals plus sunlight Yes, sir. plus chlorophyll. Sir, energy plus sunlight. Sunlight is energy only. Sunlight is nothing but energy. Will be equal to Sir, glucose, glucose or oxygen. starch. Oxygen. Glucose or starch plus oxygen. है ना? इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बहुत शॉर्ट में। कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में? ऐसे CO2 प्लस H2O प्लस मिनरल, और यहाँ पे एक एरो देंगे
एरो के ऊपर सनलाइट, इसके नीचे क्लोरोफिल, और ये बनेगा C6H12O6। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और क्या कर सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इसको भी 6 कार्बन कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 प्लस 6 18, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो यहाँ 12 करने के लिए 6 यहाँ डाल देंगे। तो सभी एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड should be equal to the number of elements in the left hand side, right hand side. Okay, this is oxygen. Yes, Viren, you want to say something? Differentiate between total and partial parasitic plants. Okay, again very good question. Question number 3. Differentiate between total and partial parasitic plants. Total parasitic plants are achlorophyllous. They take nutrition from other plants completely. वो थोड़ा भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। Total parasitic plants completely depends on host plant.
like Cascata. Partial parasitic plant. Depends on host, but also does or do photosynthesis. Example, mistletoe. It grows on mango tree. This was one, one, two, two. They are achlorophilus. Achlorophilus. They do not have chlorophyll, and they are green and chlorophyllus. Next question is, define rotation of crops. Define rotation of crops. The process of growing leguminous plants like grams, pea, after cereals like wheat and rice to replenish the nitrogen back to soil is called as crop rotation.
है, डायग्राम टू अंडरस्टैंड. So this is Earth atmosphere. It contains 78% nitrogen, but the bond between nitrogen is strong. It is a strong bond. It cannot break. So plants are not able to digest. Plants are not able to digest nitrogen directly. So what happens? Some plants have got roots, and in that roots they have nodules. These are called as root nodules. Such plants are called as leguminous plants. Those who have got root nodules. जिसके पास रूट नोड्यूल होता है उनमें दो तीन तरह के बैक्टीरिया रहते हैं. इन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम या एजोटोबैक्टर. ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को ब्रीथ कर सकते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनाते हैं. ये बनाते हैं नाइट्रोजनस प्रोडक्ट. कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं, राइजोबियम बनाते हैं और एजोटोबैक्टर बनाते हैं. इस प्रकार से रूट्स जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है. अदरवाइज वो नहीं कर सकता. ठीक है, N2 के फॉर्म में तो नहीं. दूसरा एक और उपाय है कि हम बाहर से फर्टिलाइजर या मैन्योर डाल सकते हैं. जैसे एनपीके डाला, तो एनपीके में क्या है? एनपीके में नाइट्रोजन है. या डीएपी डाला या यूरिया डाला, तो ये सभी क्या है? फर्टिलाइजर्स है. ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजर वी कैन ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, है ना. बाय क्रॉप रोटेशन वी कैन ऐड with the help of crop rotation we can add or replenish nitrogen back to soil after every cereal crop harvesting.
तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये बैक्टीरिया के फॉर्म में, बैक्टीरिया इसको एब्जॉर्ब करता है और उसको नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सीरियल क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद लेज्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं। हाँ जी, डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। So without adding fertilizer, we can add nitrogen. Without adding fertilizer, we can add nitrogen by crop rotation. So this is not required. ठीक है? Without fertilizer or manure, nitrogen can be added by crop rotation. तो खर्च भी तो बचेगा, है ना? It will prevent cost. It will prevent cost. Then it will make the soil good. This will be good for soil. The next is, what are parasites? Explain with an example. Question number 5. Question number 5 of section 4. What are parasitic plants? Explain using an example. ये तो हमने किया अभी, चलो फिर दोबारा कर लेते हैं. The plants which depend on host to extract nutrition totally or partially are called parasitic plant. Example, Kaskata,
It is a total parasitic plant. It has no chlorophyll. Second example is mistletoe. It is hosted on, it is partial parasitic plant found on mango trees, and it has chlorophyll. Please don't do all this kind of chatting. Okay, the energy of the teacher should not be there to control all this. Take care next time, don't do it. You can put the videos on so that I can see if only students are there in the class or somebody else is there. Although the class is good, very honest, I have good faith. Put the video on, everyone. Yeah, everyone, please put your video on. Pravesh, Ansul, Shastri, Atri, Anjali Yadav, put your video on. Show me your study table. Where are you studying? And Yash Bharadwaj, are you sleeping? Yash Bharadwaj, are you on the bed? Are you on the bed? Okay. Can you show me your table where you are studying? Show me the table. Good, good. Very good. Yes. Pravesh, put your video on. Pravesh, Ravneet. Who is DJ Alok? Do not change your name. Please come with your genuine name. Okay, these are not good etiquettes. This will not harm us. It will be bad for you. Anjali Yadav, put your video on. Okay. Now show me the classwork notebook where you are writing your classwork.
Anjali Yadav, put your video on. Aryan Latter, put your video on. Shrishti, put your video on. DJ Alok. Okay, DJ, there is no DJ required. Okay, classwork notebook. Vipul, good. You are maintaining your classwork notebook. Diksha, you are maintaining. Yash Bharadwaj, sit straight. Show me your notebook. Akshay Lathar, show me your notebook. Very good, very good. Aman, show me your notebook. Aman, put your video on. Very good. Viren, show me your notebook. Yes, very good. So, what will be your homework? Your homework will be to read the paragraph lichen shares nutrient and water. Lichen share nutrients and water. Okay, this part you have to read. You don't have to do anything. You have to only read and send me a nice reading video. Okay, send me a nice reading video of page number 8. The name of the paragraph is lichens share